Okay, please, sir, please. Okay. Yeah. So I will start with some of my knowledge regarding weed flora shift and problematic weeds mostly. So the word shift in flora, weed flora, is not a new thing. It is happening since long time, knowingly and unknowingly to us. And weeds have more invasiveness than the crops. So weeds can acclimatize in any kind of conditions, and they have genetically diverse genetic makeup, and they can take advantage of the various climate change activities throughout the world. Then actually what weed in speaking in Hindi is uh, see in crop हम लोग बहुत सारे मीन्स क्रॉपिंग करते हैं, उसमें क्रॉप एंड वीड, सो क्रॉप का कंपोजिशन तो सेम है, बट अकॉर्डिंग टू द एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट एस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कि वीड का जो कंटेंट है, जो जो कंट्रीब्यूशन है, या जो उनका स्पीशीज वाइज काउंट है, वो सीजनली चेंज होते रहता है बिकॉज ऑफ दिस सम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. उसको हम लोग जो है वीड फ्लोरा शिफ्ट कहते हैं. तो ये वीड फ्लोरा शिफ्ट बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे आपको बताया मैंने, उसमें से एक कारण है दी एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. उस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का वीड फ्लोरा शिफ्ट पर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से असर हो सकता है. और ये जो वीड फ्लोरा शिफ्ट है, ये जैसे मैंने आपको बताया अभी क्यों हो रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, लाइक सपोज हम लोग कोई कन्वेंशनल टिलेज कर रहे हैं, और कन्वेंशनल टिलेज से हम लोग कंजर्वेशन टिलेज की तरफ अगर मुड़ते हैं, कंजर्वेशन टिलेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस लाइक कवरिंग द क्रॉप रेसिड्यू, वी आर मूविंग टुवर्ड्स मिनिमम टिलेज. सो ऐसे कंडीशन में जो कन्वेंशनल टिलेज में जो वीड्स होने चाहिए, उसका जो पॉपुलेशन जो है उसमें चेंज आ सकता है, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं कि जीरो टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज में प्लांट जो वीड का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता है. देन जो वीड फ्लोरा शिफ्ट में क्रॉप के ऊपर और वीड के जो स्पीसीज के ऊपर, जैसे आपको बताया मैंने, असर पड़ता है. इस चीज में जो टॉलरेंट वीड स्पीशीज है, उनका पॉपुलेशन वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ दे आर गेटिंग कंडूसिव एटमॉस्फेयर एंड कंडूसिव क्लाइमेटिक कंडीशन. देन हम लोगों को अगर वीड फ्लोरा शिफ्ट के बारे में जानकारी लेना है, सो हम लोगों को क्रिटिकली जो शिफ्ट है उसको ऑब्जर्व करना हमने सीखना चाहिए. सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द शिफ्ट इन वीड पॉपुलेशन इन वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम. जो चेंजेस हो रहे हैं हम लोग जो है माइन्यूटली ऑब्जर्व करना हम लोगों ने सीखना चाहिए. इस वजह से क्या होगा, अगर हम लोग जो चेंजेस देख पाते हैं तो हम लोग न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या इनोवेटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उसके अंदर हम लोग ला सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन दी है, अ वीड शिफ्ट इज अ चेंज इन कंपोजिशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ वीड. सो वीड शिफ्ट जो है वो वीड का कंपोजिशन मीन्स एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉपुलेशन कितना है, मोनोकॉट कितने हैं, डाइकॉट कितने हैं, एमोंग मोनोकॉट कौन सी स्पीशीज है, डाइकॉट में कौन सी स्पीशीज है, सेजेस के अंदर कौन सी स्पीशीज है. तो ये सारे जो चेंजेस है वो हम लोगों ने देखना है. कहाँ देखना है, इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल चेंजेस. तो हम लोगों ने जो भी नेचुरल या ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल चेंजेस किए हैं उसको देखते हुए जो है ये चीजें हमको देखनी है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ वीड शिफ्ट. सो पर्टिकुलर क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉप पैटर्न के अंदर सीजन वाइज वीड का शिफ्ट होना, यानी उनके पॉपुलेशन कंपोजिशन में चेंज होना, उसको हम लोग कहते हैं वीड शिफ्ट. और वीड शिफ्ट जो है इट अकर्स व्हेन वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डू नॉट कंट्रोल एंटायर वीड कम्युनिटी. एक
वीड डोमिनेट करता है सपोज एक जगह पर, और दूसरा वीड नहीं कर पा रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है एक खास तरीके के वीड पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है ग्रो होने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरा जो वीड पॉपुलेशन रहेगा उस कंडीशन में वो रिसेसिव कंडीशन में रहेगा या तो सप्रेसिव कंडीशन में रहेगा। उस वजह से दूसरा जो वीड का पॉपुलेशन है वो वहां पर डोमिनेट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग लोलैंड कंडीशन ऑफ राइस। लोलैंड कंडीशन जो है राइस हम लेते हैं, तो वहां पर हम लोग देख पाएंगे कि एक खास करके तरीके के जो वीड्स है, फॉर एग्जाम्पल देर इज डोमिनेंस ऑफ द इचिनोकोला कोलोनम। Okay, so such kind of weed can dominate in lowland condition of rice। लेकिन जो दूसरे जो डाइकॉट वीड्स है वहां पर डोमिनेट नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वीड को कंड्यूसिव कंडीशन मिल रही है वहां पर अडॉप्ट करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अदर डाइकॉट वीड्स say they normally coming in the upland condition or normal condition, so they are not able to dominate। So this is the shift। One particular weed is getting a chance to dominate, okay, and others are become suppressive। सो अलग अलग जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है, जैसे हम लोग हर्बिसाइड का यूज करते हैं, पर्टिकुलर टिलेज ऑपरेशन करते हैं, कौन सा मैन्योर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैन्योर कौन से कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग क्रॉप को किस टाइम हार्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। इस वजह से इन सारे जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से वीड के स्पीशीज के अंदर चेंजेस आता है। अगेन इट इज कॉल्ड एज वीड शिफ्ट। जैसे एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ वीड जो है उसको हम लोग किल कर देते हैं। बट ऐसे भी कुछ वीड होते हैं जो उस हर्बिसाइड के अगेंस्ट में टॉलरेंट हो सकते हैं। तो जो वीड्स जो है किल्ड हो जाते हैं दे आर सप्रेस्ड, लेकिन टॉलरेंट वीड जो है उसी एरिया में बार बार आते रहते हैं उसी पर्टिकुलर क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर। क्योंकि ये जो टॉलरेंट स्पीशीज है दे आर गेटिंग मोर चांस टू रिप्रोड्यूस, इंक्रीज देयर कम्युनिटी एंड इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। नाउ एनी कल्चरल, अब किस वजह से वीड शिफ्ट पॉसिबल होता है, देखिए अगेन, एनी कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रैक्टिसेस that modifies the growing environment without controlling a species equally can result in a weed shift। जैसे आपको इसके पहले भी बताया मैंने, अलग अलग प्रैक्टिसेस है, वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है। इन प्रैक्टिसेस के ऊपर पर्टिकुलर एरिया में वीड के ऊपर, वीड के पॉपुलेशन के ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए पर्टिकुलर स्पीशीज को ही जो है सुटेबल कंडीशंस मिलती है ग्रो होने के लिए। लेकिन कुछ वीड स्पीशीज है जो ऐसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से ग्रो नहीं हो रही, अल्टीमेटली मींस दे आर कंट्रोल्ड, या उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, ओके। इस वजह से जो है वीड शिफ्ट जो है पॉसिबल हो रहा है। नाउ यू सी, इफ यू आर हैविंग अ हर्बिसाइड, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, से सपोज आप लोग 2,4-D का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो 2,4-D जो हर्बिसाइड है इट इज बेसिकली किलिंग द डाइकॉट प्लांट्स एंड द वीड्स ओनली। इस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर चांस क्या बनता है कि कुछ मोनोकॉट वीड का पॉपुलेशन जो है वहां पर डोमिनेट हो, ऐसा हो सकता है। सो इस वजह से जो है डोमिनेंस ऑफ स्पीशीज जो है वो चेंज होते रहता है, क्रॉप वाइज, क्रॉपिंग सिस्टम वाइज, सॉइल वाइज, क्लाइमेट वाइज, ये सारे चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल है वीड के डोमिनेंस या सप्रेशन के लिए। सो एक पर्टिकुलर वीड हम लोग जो बता रहे हैं, बात किए जो जिस वजह से हर्बिसाइड की वजह से आपको बात किया मैंने, जिस वजह से एक जो है ससेप्टिबल वीड जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो वहां पर जो रेजिस्टेंट स्पीशीज है जो टिक सकती है वो वहां पर टॉलरेंट स्पीशीज हम उसको कहेंगे, तो वहां पर वो डोमिनेट हो जाएगी।
इस वजह से जो ससेप्टेबल वीड स्पीशीज है उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, और टॉलरेंट स्पीशीज जो है उनका पॉपुलेशन वहां पर बढ़ेगा। ओके, सो वीड शिफ्ट जो है इट इज डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी शिफ्ट इन डिफरेंट स्पीशीज। नाउ वीड शिफ्ट अलग चीज है और वीड रेजिस्टेंस अलग है। वीड रेजिस्टेंस क्या चीज है? एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड जो है, आज तक हम उसको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ वीड को किल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा चीजें हम लोगों को देखने मिलती है जिस वजह से पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ वीड जो है, जो पहले कंट्रोल हो पाता था, आज वो जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ओके, सो इट बिकम्स रेजिस्टेंट। सो उसके कहते हैं हम लोग वीड रेजिस्टेंस। सो प्रीवियसली द पॉपुलेशन ऑफ weed was able to control through a particular herbicide. Now, due to repeated use of the same herbicide, there is a development of the resistance. So, weed shift occur with any agronomic practice. जैसे इसके पहले आपको बताया मैंने, कोई agronomic practice की वजह से भी है वो weed shift हो सकता है, लेकिन resistance जो है किस वजह से हो सकता है? मोस्टली हर्बिसाइड के कंटिन्यूअस इस्तेमाल की वजह से वीड रेजिस्टेंस देखने मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को अभी टाइम आ गया है कि उस हर्बिसाइड को चेंज कर दे और नया हर्बिसाइड वहां पर इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ वीड को हम लोग कंट्रोल कर पाए। सो यूज ऑफ सिंगल क्लास हर्बिसाइड एप्लीकेशन continuously over time creates selection pressure। कंटिन्यूअसली वही टाइप का हेर्बिसाइड इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ वीड को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप ग्रो हो जाओ, आप मत ग्रो हो जाओ। सो इट इज क्रिएटिंग सिलेक्शन प्रेशर एंड दैट्स व्हाई the weeds they are getting resistant to the herbicide. You can see in this picture, you can see the species shift. You can see the few dicots are here and the monocots are more, but day by day the sprays of the herbicide are increasing, and you can see the population of dicot is favorable and the population of the monocot is reducing. See in the third picture, you can see here the dicot population is increased and monocot have been decreased. So this thing is a weed shift. ये जो है पर्टिकुलर जो है कारण की वजह से वीड का शिफ्ट है। ओके, एक पॉपुलेशन और एक स्पीशीज कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। नाउ रेजिस्टेंस क्या है वो देखिए आप लोग। रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, herbicide spray करते जा रहे हैं year after year. Now because of that what is happening, a resistance is developed in one plant. Here you can see now these weed species will reproduce, and this will produce more number of seeds. Now these seeds will be transferred in the next season, and next season you can see the population of the resistant weed is increased. Here you can see. Okay, again in next, again here the seed production is more here, and that's why again in next season you can see the population of the resistant weed is again increasing. Okay, and this is how the resistance is multiplied and passed to next season. So how the herbicide resistance management can be done? It can be done through proactive management practices and reactive management practices. Proactively, what we can do, we have to go for the cultural practices like crop rotation, close spacing, high seed rate, appropriate sowing date, time, so that the cultural practices have more foliage, more dominance over the population of the weeds. Then we have the mechanical practices and
herbicide mixtures and rotations. Then reactive management practices में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए mechanical options and herbicidal option is there. जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने आपको इसके पहले कि वीड शिफ्ट जो है ये ज्यादा कॉमन देखने मिलता है. वीड का जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो चेंज होते हुए हम लोग देख सकते हैं ज्यादा. दिस इज द नेचुरल फिनोमेना. जैसे आपको पहले बताया मैंने, फर्स्टली इट इज नेचुरल, secondly it is controlled by man-made practices. But जो रेजिस्टेंस वाला जो फिनोमेना है वो हमको फ्रीक्वेंटली देखने नहीं मिलता है. सो हम लोगों का नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन क्या है हर्बिसाइड के बारे में, अगर एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या कहते हैं उसको कि ये जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो गया इसमें. और कुछ लोग का ऐसे मानना है कि जो वीड में रेजिस्टेंस जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप की वजह से भी आता है, लेकिन ये सही बात नहीं है. बिकॉज वीड शिफ्ट और रेजिस्टेंस जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये किस चीज से रिलेटेड है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप के अंदर हम लोग जब हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं उस वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं और उस चीज को हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबल मानेंगे रेजिस्टेंस डेवलप होने के लिए. सो दैट्स व्हाई एक्चुअली जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स है इंडिया में वीड्स के अगेंस्ट में नहीं है. वी हैव cotton is the only genetically modified crop in India, that is for the control of the bollworm complex. On the contrary, in America, there are genetically modified crops for the glyphosate crop. उसको हम लोग कहते हैं Roundup Ready soybean, Roundup Ready maize, Roundup Ready canola. ओके ऐसे जो क्रॉप्स है सोयाबीन, 3-4 जो क्रॉप्स है, कॉटन भी है, उसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो है उसका पॉपुलेशन ज्यादा होने से ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और ग्लाइफोसेट जो है उसके वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वीड फ्लोरा में. सो इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो है रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए. बट दिस इज नॉट द कंडीशन इन इंडिया, दिस कंडीशन इज इन अमेरिका. और एक चीज क्या है या उसको कहेंगे हम लोग मिथ कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स से जो रेजिस्टेंस है वीड के अंदर आता है और वीड जो है रेजिस्टेंस करवाता है. बट अगेन इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज उसके लिए क्या चीज होनी चाहिए मालूम है, उसके लिए दो जो क्रॉप है एंड द वीड वो दोनों जो है सेम फैमिली को और उस बिलोंग होने चाहिए और उसके अंदर जो रिलेशन है वेरी क्लोज होना चाहिए. तो जनरली ऐसे देखने नहीं मिलता है. सो ट्रांसजेनिक क्रॉप में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में जो है वीड शिफ्ट जो है एंड रेजिस्टेंस जो है हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज देयर इज यूज ऑफ सिंगल हेर्बिसाइड. जैसे आपको बताया मैंने कि राउंडअप रेडी सोयाबीन जो है ये सिर्फ ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है. सो उसमें क्या हो रहा है, ईयर आफ्टर ईयर, सीजन आफ्टर सीजन वी आर यूजिंग ओनली वन काइंड ऑफ हेर्बिसाइड दैट इज ग्लाइफोसेट. सो उस वजह से वीड शिफ्ट या वीड रेजिस्टेंस जो देखने मिल सकता है, ना कि ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स. तो जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे उस चीज का वीड शिफ्ट एंड वीड रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा. नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वीड शिफ्ट या रेजिस्टेंस जो है वो कम कर पाएंगे. तो सबसे पहली चीज क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द वीड स्पीशीज. हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि आइडेंटिफाई और असेसमेंट ऑफ द वीड स्पीशीज कि कौन से पर्टिकुलर वीड के अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो हम लोगों को देखना चाहिए. तो उसके लिए क्या चाहिए, रेगुलर फील्ड विजिट होने चाहिए. देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज of the composition of weed in our area, so we should have a practical knowledge regarding this thing. Then once you have assessed or identified the such kind of population,
Then in young seedling stage, we have to control those seeds, the weeds, so that we can control the weed shift or weed resistance. Then we have to see we should develop a habit of monitoring of the escapes. हम लोग देखने चाहिए कि कौन से वीड जो है एस्केप हो रहे हैं पर्टिकुलर हर्बिसाइड के अगेंस्ट में. So it is difficult, actually it is a difficult thing, but we have to see this phenomena. So इस वजह से क्या है, हम लोग क्या कर पाएंगे, जो एस्केप्स ढूंढ पाएंगे हम लोग. इस वजह से क्या होगा, guide, we have to identify and frequent monitoring, we can detect the problem of the weed early, and guide management practices, then including herbicide selection, rate and timing, इसको हम लोग जो है मैनेज कर सकते हैं. So herbicide rate and timing regarding the weed shift या weed control. So herbicide rate is very important. A particular herbicide have particular dose. So उस particular dose को हम लोग जो है कौन से स्टेज में दे रहे हैं वो important है. Okay. So a particular herbicide is recommended for particular stage of the crop. Say pre-emergence herbicide जो है कोई है, उसका डोज अलग होगा. उसी herbicide का post emergence डोज वो अलग हो सकता है. सो उस वजह से हम लोग जो है हर्बिसाइड का रेट जो है देखना जरूरी है. अगर डोज इज रिड्यूस्ड, अगर डोज कम हो गया तो क्या हो गया, प्लांट्स में मींस वीड्स के अंदर टॉलरेंस आ जाएगा और रेजिस्टेंस बाद में डेवलप हो सकता है. बट in regard to time of application is important, because if you are using a particular herbicide at lower dose, लेकिन पोस्ट इमरजेंस के लिए डोज आपको चेंज करना पड़ेगा. एग्जांपल बताऊंगा आपको. मैंने लास्ट ईयर एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड अट्राजिन इन मेज. सो उसका डोज जो था वो अलग था, बट say for example 60 ml in 10 liters of water. But what happened, when the crop was grown enough and it was at the say 40 days or 50 days, after that what happened, the crop was steady enough and weed population was also increased. So the same dose, suppose we had used a composite herbicide, say Claris, तो उस वजह से क्या हो पाया था, वहां पे वीड का पॉपुलेशन जो है कंट्रोल नहीं हो पाया. सो हम लोगों को उसका डोज बढ़ाना पड़ा, उसके बाद जो है वीड हम लोग कंट्रोल कर पाए. क्रॉप रोटेशन जो है सबसे इफेक्टिव प्रैक्टिस है. किसके लिए, अगेन फॉर दी वीड शिफ्ट एंड वीड रेजिस्टेंस. क्रॉप रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ क्रॉप के अंदर एक पर्टिकुलर जो है वीड जो है डोमिनेट करता है. ओके, एक पर्टिकुलर सीजन में. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है वीट ले रहे हैं तो वीट के अंदर फाइलरिस माइनर जो है देखने मिलता है रबी सीजन में. ओके, देन सो इसको कहते हैं हम लोग जो होस्ट क्रॉप के अंदर जो है एक बेस वीड होता है. सो ये वीड को जो साइकिल है हम लोग तोड़ना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोटेशन लेना बहुत जरूरी है. रोटेशन की वजह से क्या होगा, उसका जो ग्रोइंग पैटर्न है पर्टिकुलर वीड का, उसका ग्रोथ साइकिल हम लोग जो है रोक सकते हैं. सो क्रॉप डिफर इन देयर एबिलिटी टू कॉम्पीट विथ वीड. सो एक पर्टिकुलर जो है वीड जो है पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर आपको जैसे बताया ज्यादा हो सकता है. सो रोटेशन करने की वजह से जो है उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट सीजन में. सो दैट्स व्हाई रोटेशन अलाउज द यूज ऑफ डिफरेंट वीड कंट्रोल प्रैक्टिसेस सच एज कल्टीवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड विद डिफरेंट साइट्स. सो उस वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है डोमिनेट नहीं कर पाती है रोटेशन की वजह से. सो नो सिंगल वीड स्पीशीज should become dominant. So for example you can see here effect of crop rotation on population of the Phylloris minor. Phylloris minor जैसे आपको बताया मैंने, जो वीट के अंदर डोमिनेट करता है,
So rice wheat cropping is the most dominating cropping system in of the India, and mostly dominating in northern part of the India. So rice wheat में आप लोग देखिए 10 साल राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे किया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ देखिए, फाइलरिस मैनन का पॉपुलेशन देखिए कितना है पर मीटर स्क्वायर. ओके, देन बेस क्रॉप अगर राइस को ही पकड़ते रहे सपोज हम लोग, तो देखिए राइस बरसीम और राइस व्हीट. तो राइस बरसीम के बाद राइस व्हीट लिया, तो एक क्रॉप चेंज होने की वजह से देखिए पॉपुलेशन जो है कितना चेंज हो गया, देखिए 90% लगभग. ओके, बट अगेन राइस व्हीट, राइस कॉटन और राइस व्हीट फिर से लेने की वजह से अगेन पॉपुलेशन जो है फिर से डेवलप हो रहा है यहाँ पर. ऑन द कॉन्ट्ररी जहां पर सबसे लो पॉपुलेशन है वहां पर हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा देखते हैं, राइस फॉलोड बाय विंटर व्हीट, then soya sorghum followed by rye and maize followed by the wheat. You can see the population कितना है देखिए यहाँ पर 18 per meter square only. So you can see कि ईयर आफ्टर सीजन वही पॉपुलेशन हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें सॉरी वही क्रॉप ले रहे हैं, तो उसमें जो डोमिनेंस ऑफ वीड है वो बढ़ते जा रहा है. सो फाइलारिस माइनर जो है is very dominant weed in rice wheat cropping system. Particularly, it comes in wheat crop during Rabi season. अलग अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने की वजह से हम लोग जो वीड का शिफ्ट है उसको हम लोग रोक सकते हैं. सो कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग जिसकी वजह से हम लोग ये रोक पाते हैं देखिए. सो वी कैन स्टॉप दी और वी कैन curtail the population of the weeds by delaying irrigation. इरिगेशन अगर डिले कर पाएंगे तो हम लोग ये कर सकते हैं, या if the problem weed germinate at specific time, हम लोगों को मालूम है कि पर्टिकुलर वीड जो है कौन से टाइम जर्मिनेट हो पाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन चेंज द क्रॉप सीडिंग डेट. तो हम लोग सोइंग डेट चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन बिल्डअप है उस स्पीशीज का उसको हम लोग रोक सकते हैं. देन हार्वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, जिसके वजह से अर्ली हार्वेस्ट या लेट हार्वेस्ट, जिस वजह से हम लोग जो है पर्टिकुलर वीड को हम लोग सप्रेस कर सकते हैं. सो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें देखिए यहाँ पर ब्यूटेक्लोर जो है उसका इस्तेमाल किया, और ब्यूटेक्लोर का इस्तेमाल जनरली हम लोग राइस क्रॉप में करते हैं. सो ब्यूटेक्लोर आप लोग देखिए यहाँ पर 6 साल के लिए लिया गया है. So it is used for 6 years, butachlor. So now you can see there is decrease in the population of the Echinocolla colonna and Echinocolla की दूसरी species है उसके अंदर. So you can see the population decreased by 4 times of Echinocolla colonna, and Echinocolla glabrans का population जो है 6 time reduce हुआ है. You can see here butachlor के इस्तेमाल की वजह से in rice. So these are the खास करके Echinocolla colonna is a dominant species in rice. So you can see the decrement of the population. On the contrary, there is increase in the population of the species, new species, because you can see Monocora viginalis and Spinoclea gelanica. So these species are increased due to use of the butachlor. So you can see continuous use of one herbicide is increasing the population of these two species, and there is decrement of the dominant population of the weeds like Echinocolla colonna. Again, one example is there in wheat crop. So I told you earlier that wheat is a dominant, Phylloris minor is a dominant weed in, Phylloris minor is a dominant weed in wheat crop, and isoproteron is generally used for control of the Phylloris minor. So generally what is happening, year after year we are using isoproteron. Now what happened, there is development of the resistance, you can see here. The development of the resistance is here. So due to development of this resistance, we have changed the herbicides.
Now we can use cladinofob and sulfosulfuron. So you have used these two species. Now what happened? Now what is happening? The Phylloris minor is controlled again. Now because of this, there is development or dominance of the new kind of species, that is Rumex species. So again you can see आइसोप्रोटीरॉन का इस्तेमाल की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था पैरालिस माइलन के अंदर। हमने हर्बिसाइड को चेंज किया। हर्बिसाइड को चेंज होने की वजह से फाइलरिस माइनस का पॉपुलेशन जो है अगेन कंट्रोल हो गया। बट इस वजह से एक थर्ड चीज हो गई है। वो चीज कौन सी? देखिए, एक थर्ड चीज है कि देयर इज नैरो स्पेक्ट्रम विड कंट्रोल यूजेस इंक्रीज इन रूमेक्स। सो रूमेक्स का जो पॉपुलेशन है यहाँ पर बढ़ गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल फॉर द रेजिस्टेंस एंड दिस वाज द एग्जांपल फॉर द शिफ्ट इन पॉपुलेशन। इचिनोकोलोना की जगह और इचिनोकोला ग्लैब्रेंस की जगह ये दो स्पीशीज जो है वो डोमिनेट हो पाई है। सो दिस इज द शिफ्ट इन वीड बिकॉज ऑफ द ब्यूटाक्लोर कंटिन्यूस उसके इस्तेमाल की वजह से। नाउ देखिए, सोयाबीन वीट क्रॉपिंग सिस्टम के इस्तेमाल की वजह से भी वीड के अंदर शिफ्ट हुआ है। एग्जांपल यू कैन सी हियर इचिनोकोला कोलोना, इल्यूसाइन इंडिका। ओके, ये जो स्पीशीज जो थी ये प्रीवियसली थी। अब जो है नया क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करने की वजह से नए जो वीड्स है हम लोग देख पाते हैं। कौन से? सिलोसिया अर्जेंटिया है, ओके, डाइजेरिया आर्वेंसिस है, ये कॉमन वीड्स है। So there is emergence of the new weeds. So again, what is the reason? Continuous use of the chlor and fluchloralin in this cropping system. Again in transplanted rice, Echinocola cruscali and Echinocola colonna, ये dominant species है राइस के अंदर। कंटिन्यूस यूज की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर दो नई स्पीशीज जो है इस्चामम रुगोसम एंड लेप्टोक्लोरा चेनेंसिस, ये दो स्पीशीज जो है ये डोमिनेट हो रही है यहाँ पर। दिस बिकम मेजर वीड। ओके, we can able to control these two, but again two new species are dominating. So you can see how the resistance and shift can happen in a particular crop or particular cropping system. Now rotation of herbicide, इस वजह से एक ही साइड इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो रहा है? जैसे हम लोगों ने अर्लियर देखा, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर की वजह से एक पर्टिकुलर एक जो वीड है उसको चांस मिल रहा है आगे बढ़ने की वजह से, and other species are suppressing, and after some time it is creating resistance. So instead of that, what we can do, we can go for the multiple use of the herbicides or rotation of the herbicide. So हम लोग ऑल्टरनेटिव हेर्बिसाइड्स निकालने चाहिए ताकि हम लोग उसका इस्तेमाल करें। सो रोटेशन की वजह से क्या होगा? वीड शिफ्ट जो है वो हम लोग उसको कम कर पाएंगे। ओके, नहीं तो एक ही टाइप की स्पीशीज जो है उसको चांस मिलेगा आगे बढ़ने की वजह से, और शिफ्ट जो है क्लियर कट देखने मिलेगा। सो वी हैव टू रोटेट द हर्बिसाइड। हर्बिसाइड रोटेशन की वजह से खास चीज क्या हो रही है? खास चीज क्या है? हर हर्बिसाइड का मोड ऑफ एक्शन अलग है। some herbicides, they are creating problem in the respiration of the crop, some are creating in the photosynthesis, और भी बाकी herbicide के क्लास के वजह से अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग the mode of action is there. So if the mode of action is changing, then the method of killing the plant is also changing. So उस वजह से जो डोमिनेंस है एक पर्टिकुलर वीड का उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल या जिसको
हम लोगों ने नजर रखनी चाहिए जिसके ऊपर, वो चीज कौन सी है? देखिए, वीड ससेप्टिबिलिटी चार्ट का इस्तेमाल करना या पब्लिकेशन करना। कौन सी चीजों का? हर्बिसाइड केमिकल फैमिलीज, जिनको हम लोग जो है पब्लिश करेंगे, वो किस चीज में हेल्प कर सकती है? इट कैन असिस्ट ग्रोअर्स इन चूजिंग हर्बिसाइड विद डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगेन रोटेटिंग हर्बिसाइड जो है वो दोनों चीज के लिए कारगर है। आइदर आइदर फॉर द सॉरी बोथ both for the shift and resistance. So what is happening? जैसे हम लोगों ने देखा है कि मोड ऑफ एक्शन अलग है, उस वजह से उसका किलिंग भी अलग होगा और उस वजह से दूसरे स्पीशीज को चांस मिल सकता है और एक स्पीशीज सप्रेस हो सकती है। तो ससेप्टेबल वीड जो है वो किल हो जाता है ऐसे केस में, एंड रेजिस्टेंस वन survives. They are seeding, again increasing their population. So using an effective herbicide with different mode of action, उसके वजह से क्या है, जिसकी वजह से ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर असर पड़ सकता है और उसका ध्यान हम लोगों ने रखना है। So frequency of rotation depends on the weed species and escapes. Rotation on the herbicide. Or while using the multiple herbicide, what we have to do, producers should stay alert to the appearance of the weed species, shift and resistance both. Weed resistance should be confirmed by controlled studies. वीड का जो रेजिस्टेंस है हम लोगों ने लेबोरेटरी स्टडी करना चाहिए और साइंटिस्ट के साथ उसका डिस्कशन करने के बाद वी हैव टू डिसाइड दैट whether it is happening or not. Then prevent reproduction of potentially resistance biotypes. So treat weed escapes with alternative herbicide. So that is, it is recommended. Now we'll move to problematic weeds. So problematic weeds में अलग अलग प्रकार के weeds है, उसमें एक weed कौन सा है? Aquatic weeds. So aquatic weed जो है अलग अलग types है aquatic weeds. We'll see. So weed plants growing either in water or having very high requirement of for moisture, they are called as aquatic weeds. और aquatic weeds जो है water body में देखने मिलते हैं. But what is the prime reason of the aquatic weeds? सबसे बड़ा कारण है aquatic weed होने का जो है eutrophication process. तो eutrophication process में क्या होता है? Dominance of the aquatic weed. And why the eutrophication is happening? Eutrophication is happening because of the plants are getting plants, I mean weed here. So weeds are getting sufficient nutrients like phosphorus and nitrogen. So phosphorus is more responsible for the eutrophication. So because of the green revolution, you can say, or industrial revolution, the residues or pollution of the nitrogenous and phosphorus fertilizer responsible for the development of the problematic weeds in water bodies, and they are creating more problems for the aquatic animals. उस वजह से फिश का जो है डेथ हो जाता है, सारा जो ऑक्सीजन है aquatic weeds जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, and the aquatic life is devoid of the oxygen. So day by day the population of the aquatic life is decreasing because of the aquatic weeds. So classification of the aquatic weeds.
you can see the aquatic weed can be classified into three different groups: floating weeds, submerged weeds and immersed weeds. So ये तीन part में we can classify the aquatic weeds. So in floating weeds, which kind of population is there, you can see. So floating weeds, they are either free floating or rooted floating. दोनों टाइप के weeds है जो freely float कर पाते हैं, या तो soil के अंदर they are having their roots and they are called as free floating weeds. Then submerged weeds. Submerged weed में दो types है. Shallow water submerged, पानी के ऊपरी सतह पर जो है सबमर्ज्ड वीड है, या तो डीप वाटर है. दोनों टाइप के वीड्स हम लोग देख पाते हैं. और इमर्ज्ड जो वीड्स है जिनका वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होता है. सो इमर्ज्ड वीड जो है, यू कैन सी दी these are the immersed weeds. Okay, you can see submerged weeds below the water, submerged weed above, means on the layer of the water. Then floating, they are floating on the water without roots, floating with roots. So this kind of this is the classification of the aquatic weeds. Now क्लासिफिकेशन ऑफ aquatic weeds में हम लोग देख सकते हैं कि फ्री फ्लोटिंग weeds होते हैं. So water hyacinth and water lettuce, these are the two types of the free floating weeds. Water hyacinth and water lettuce. Then rooted floating weeds, ऐसे जो weeds है जिनके roots है and still they are floating above the water. So water lily, lotus ऐसे examples है इस चीज के rooted weeds के, you can see here. Then submerged weeds. Submerged weed में shallow water submerged weeds होते हैं. So musk grass and nutella, these are shallow water submerged weeds. And deep water submerged weeds कौन से देखिए, hydrilla and water milfoil. So hydrilla जो है आपको well known है. वैसे ही well known weeds में कौन से weeds है, you can see water hyacinth and water lettuce. Actually these weeds actually brought in India for the ornamental purpose. इनका पर्पस तो ornamental के लिए था, लेकिन इतने डोमिनेटिंग है ये कि इन्होंने वाटर बॉडीज को कवर कर लिया बाद में. देन इमर्स्ड वीड्स में क्लासिकल एग्जांपल है कौन सी चीज, टाइफा. दिस कैट टेल टाइफा जो है वेल नोन है. ओके, ये जो है शेल वाटर में रहता है टाइफा. ओके, इसको ज्यादा डीप वाटर नहीं चाहिए. एंड दिस इज ऑल्सो द एक्वेटिक वीड. तो टाइफा जो है एक खास वीड है जो हम लोग ज्यादा देख सकते हैं. टाइफा है. एक और एक वीड है जिसको हम लोग देखिए क्या कहते हैं, बेश्रम कहते हैं. बेश्रम वो है ना, एक वीड वो है. या तो हम लोग यहाँ पे जो है अलग अलग नाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. मेजर एक्वेटिक वीड्स जो आपको भी बताया मैंने वो उसमें से है आइपोमिया कार्निया, बेशरम, टाइफा, हाइड्रिला, सैल्विनिया, मोनोकोरिया वैजानालिस, देन सैजिटेरिया, पोटेमोजेंटन आपने नाम सुना होगा, पिस्ट्रिया आपने नाम सुना होगा, वाटर लेट्यूस. सो कॉमन नेम इनके है कैट टेल, आपको जो टाइफा बताया मैंने, हाइड्रिला, वाटरफॉल, एलिगेटर वीड, अल्टरनेंथ्रा जनरली वीड जो है मींस फील्ड में देखने मिलता है. ये कारपेट वीड, एरोहेड, पॉन्ड वीड एंड वाटर लेट्यूस. इसमें से जो इमर्जेंट वीड को का एग्जांपल आपको दिया मैंने, वही एग्जांपल फिर से आ गए यहाँ पर. टाइफा जो आपको बताया मैंने खास करके. इन फ्लोटिंग वीड्स में ये अलग अलग वीड्स है, अजोला, आइकोर्निया. ओके, एंड जो सबमर्ज्ड वीड्स है उसमें हाइड्रिला है, पोटेमोजेंटन है, ये
डोमिनेटिंग वीड्स। नाउ वाटर हाइसिंथ, जैसे आपको बताया मैंने, इसमें से कुछ जो एक्वेटिक वीड्स है, इनको बेसिकली इंडिया में एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तरीके से लाया गया था। सो वाटर हाइसिंथ इज बेसिकली नेटिव ऑफ ब्राजील। एंड क्यों लाया गया इसको? बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव अपीयरेंस। सो ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको लाया गया है। लेकिन ये जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसका पॉपुलेशन इतना फैल चुका है अभी कि इसको वर्स्ट एक्वेटिक वीड की कैटेगरी में हमने डाल दिया है इसको। वर्स्ट एक्वेटिक वीड इन द वर्ल्ड, वाटर हाइसिंथ। It belongs to family Ponteraceae एंड इसके एक कैप्सूल में लगभग 300 सीड्स होते हैं एंड सीड्स आर वायबल फॉर द 5 to 20 years। देन वाटर लेट्यूस एक जो है एक्वेटिक वीड है जो साउथ अमेरिका से इंडिया में आया हुआ है। ओके, इट बिलोंग्स टू फैमिली Araceae एंड वाटर लेट्यूस जो है एंड वाटर हाइसिंथ है, ये दो ऐसे प्लांट्स है जो इट कैन अक्यूमुलेट हेवी मेटल्स। सो इट कैन अक्यूमुलेट हेवी मेटल्स। सो हेवी मेटल्स को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज है जो हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। हम इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बायो रिमेडिएशन एक टर्म है ना। बायो रिमेडिएशन में जो हेवी एलिमेंट्स है, जहाँ पर पोल्यूटेड एरिया होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं आजकल, ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसे पेड़ लगाने की वजह से वहां का जितना भी हेवी एलिमेंट है उसको ऐसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। एक और एक कॉन्सेप्ट आजकल है जिसको हम लोग नाम देते हैं एग्रो माइनिंग या क्रॉप माइनिंग। बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया थ्रू आउट द वर्ल्ड जो ढूंढा गया है जिस एरिया में हेवी एलिमेंट ज्यादा है। सो one institute is there in France, and that institute has identified some crops, and if you cultivate those crops in that area, so वो क्रॉप वहां पर लगाने की वजह से क्या है, वहां पर जो हेवी एलिमेंट है वो हम लोग डायरेक्टली जमीन से खींच कर निकाल सकते हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाइजेस्ट the biomass in the laboratory and you can extract heavy element like nickel, cobalt directly from the field। so हम लोग एग्रो माइनिंग की वजह से ऐसे एलिमेंट जो है डायरेक्टली ले सकते हैं फील्ड से। ओके, सो वी नीड नॉट गो फॉर द माइनिंग ऑफ सच हेवी एलिमेंट। तो हम लोगों ने ऐसे एलिमेंट्स की माइनिंग जो है कम कर सकते हैं। इस वजह से लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ हेवी एलिमेंट है उसको हम लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द हेवी एलिमेंट। तो बायो रिमेडिएशन के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। Then again one say weed is there, aquatic weed जिसका water fern जिसका नाम है। So it was introduced again from South America। ऑस्ट्रेलिया में इसको 1930 में इस्तेमाल किया गया for the first time and it belongs to Salvinaceae family। इस प्लांट्स के रूट्स नहीं होते हैं वाटर फर्न के। ओके, एंड इट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू vegetatively by fragmentation। Now what is the problem with the these aquatic weeds? आपको बताया मैंने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को नुकसान हो रहा है और वाटर बॉडीज जो है धीरे धीरे उसमें सिल्टिंग हो रही है, ये प्रॉब्लम है। देन इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ता है। इन इन weeds का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, अल्टीमेटली वाटर बॉडीज को नुकसान हो रहा है। ओके, रिवर्स और कैनाल्स ये इसका क्लॉगिंग हो रहा है, फिशिंग को प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी बोट्स अंदर नहीं जा सकती है इस वजह से। एंड अगेन देयर इज चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो देखने मिलते हैं किस वजह से, ड्यू टू दीज aquatic weeds।
There may be change in the pH of the crop, say water. अगेन इसका जो प्रॉब्लम्स कहाँ पर हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इरिगेशन कैनाल ब्लॉक हो रहे हैं, नेविगेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। और सबसे एक अलग बात क्या है, दैट these aquatic weeds are the breeding sites for the pests and vectors of the diseases. So they are the pest and vector, उनका जो ब्रीडिंग है उसको इंक्रीज कर सकता है. So what we can do, we can go for the management practices. Management practices like the community action और appropriate laws, regulation का हम लोग पालन करेंगे तो इस वजह से हम लोग ये कम कर सकते हैं. Then what are the advantages of the management practices? मैकेनिकल जो प्रैक्टिस है उसका एडवांटेज क्या है, देखिए अगर हम लोग वीड्स को, एक्वेटिक वीड्स को मैकेनिकली अगर कंट्रोल कर पाएंगे तो क्या है, दिस इज इको फ्रेंडली, दिस इज इको फ्रेंडली प्रैक्टिस. इसमें दूसरी चीज क्या है, चांसेस कम है. किसके चांस कम है, इकोलॉजिकल शिफ्ट के. जो वीड फ्लोरा की बात हम लोग कर रहे थे पहले, उसमें जो है शिफ्ट के चांसेस कम है ड्यू टू मैकेनिकल एक्शन. Then lessens mass nutrient load of the eutrophic water bodies. Then weed population हम लोग कम कर पा रहे हैं इस वजह से, okay. Then limitations क्या है मैकेनिकल मेथड के, अगर हम लोग किसी वजह से इसको कम कर पा रहे हैं अलग अलग मेथड से, तो अगेन द वीड कैन रीग्रो, उसमें रीग्रोथ होती है और फिर से उसका स्प्रेड जो है वाटर बॉडी के ऊपर हो सकता है. दूसरी चीज क्या, मैकेनिकल एस्पेक्ट में लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा है और ये एक्सपेंसिव मेथड है मैकेनिकल एस्पेक्ट. तो कौन कौन सी मेथड में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, नेटिंग करना, इरेक्टिंग बैरियर्स खड़े करना, देन चेनिंग करना, ड्रेजिंग करना, ड्रेनिंग करना, इन मेथड्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. अगेन जो है सबमर्जेंस, शेडिंग, क्लीनिंग ऑफ इरिगेशन वाटर, we can do it. Now biologically how we can control the aquatic weeds. Aquatic weeds को हम लोग biologically कैसे control कर सकते हैं, we can control it with different insects, fishes, पैथोजन एंड नेमाटोड्स. इन अलग अलग चीज का इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं. सो अलग अलग इंसेक्ट्स तो जो है हमने जो उनके निकले साइंटिस्ट ने, और इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. बट द मैनेजमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन बायोलॉजिकल कंट्रोल. द मैनेजमेंट ऑफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स देन केमिकल वीड कंट्रोल जो इजी है, सीधा आपको मालूम है कौन सी स्पीशीज डोमिनेंट है, कौन सा क्रॉप है, यू कैन चूज द हेर्बिसाइड एंड स्प्रे द हेर्बिसाइड. बट हियर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द बायोलॉजिकल कंट्रोल, and biological control requires long-term planning, then multiple tactics, then manipulation of the cropping system. सारी चीजों को हम लोग जो है एक साथ लेना पड़ता है, तब भी जाकर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो कर पाते हैं. Or else you are knowing that biological control is somewhat slow, okay, because number of reasons are there, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया अभी. कुछ हर्बीवोर फिशेस है जिसको हम लोग जो है सबमर्ज्ड एक्वेटिक वीड के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वो एक वीड जो फिश है उसका नाम है तिलापा. सो तिलापा फिश यू कैन यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ द एक्वेटिक वीड्स. देन इंसेक्ट्स, एक इंसेक्ट है नियोचेटिना ब्रूची, आपने शायद इसका नाम सुना होगा, या आप जो फर्स्ट टाइम जब कोर्स पढ़े होंगे ना बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स का,
तो उसमें इसका नाम जरूर सुना होगा आपने, नियोचेटिना ब्रुची एंड नियोचेटिना आइकॉर्नियाई। तो ये जो दो स्पीशीज है जो इंसेक्ट का, इसका इस्तेमाल हम लोग वाटर हाइसिंथ के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन another species is there, its name is Cryptobagos salviniae। सो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग सैल्विनिया मोल्स्टा, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल जो है कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नियोचेटिना ब्रुची is used for the water hyacinth and Cryptobagos salviniae for the Salvinia molstea। Then problematic weeds जैसे हम लोगों ने देखा कि एक्वेटिक वीड्स जो है, these are one of the kind of the problematic weeds। दूसरे problematic weeds भी, और उसकी लिस्ट जो लंबी है, उसमें से सबसे जो है problematic weeds जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड दो तीन है, वो बहुत ज्यादा नॉक्शियस या problematic है। वो है साइपेरस रोटुंडस, साइनोडोन डैक्टिलम, इल्यूसाइन इंडिका। सो problematic weeds का जो जो एक हम लोग क्या कहेंगे उसका फैशन या उसका कल्चर जो आया इंडिया में या वर्ल्ड में, बिकॉज पहले जो हम लोग वीडिंग करते थे वो टोटली वॉज अ टिलेक बेस्ड प्रैक्टिस, जिसकी वजह से हम लोग वीड्स को कंट्रोल और सप्रेस कर पा रहे थे। बट आफ्टर दैट क्या हुआ है कि हर्बिसाइड का इस्तेमाल हम लोग करने लगे, तो टिलेज बेस्ड मैनेजमेंट है वीड्स का वो कम हो गया है। इस वजह से कुछ डोमिनेंट स्पीशीज जैसे साइनोडोन डैक्टिलम है, साइपेरस रोटुंडस है, इनका पॉपुलेशन जो है बढ़ चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो वर्ल्ड है, या सॉरी ये जो स्पीशीज ऑफ क्रॉप्स वीड्स है, ये वर्ल्ड वाइड इसका प्रॉब्लम है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइपेरस रोटुंडस is a problematic weed in 92 countries, you can see here। Cyanidon dactylon is a problematic weed in 80 countries। These both are the perennial and propagated by the vegetative means, इसलिए इसका प्रॉब्लम जो है ज्यादा है। साइपेरस रोटुंडस का जो होस्ट स्पेसिफिसिटी देखिए, इसको कितने क्रॉप को ये में जो है प्रॉब्लम करता है। देखिए 52 क्रॉप्स साइपेरस रोटुंडस एंड इल्यूसाइन इंडिका इज अ प्रॉब्लम इन 46 क्रॉप्स। सो यू कैन जस्ट इमेजिन ये कितने जो नोटोरियस वीड्स है ये। देखिए साइपेरस रोटुंडस एंड साइनोडोन डैक्टिलम। So it is a list of the number of problematic weeds. You can see nut grass, Cyperus rotundus, Bermuda grass, Sanodon dactylon, barnyard grass, Echinacola colonum, जैसे राइस में हम लोगों ने देखा, and jungle grass, again in rice, Echinacola crusgalli, goose grass, Johnston grass is a wild sorghum, sorghum halley is also problematic weed, water hyacinth हम लोगों ने देखा है ना, ये प्रॉब्लम है। फैट है चिनोपोडियम अल्बम, इट इज अ रबी वीड। देन लार्ज क्रैब ग्रास, फील्ड बंड वीड, कन्वोलुलस अर्वेंसिस, हम लोग चांदवेल कहते हैं। सो दीज आर problematic weeds। This is the long list of the problematic weeds। Now, what we can do for such kind of perennial problematic weeds? So prevention is most effective method। So how you can prevent it? It can be prevented by ensuring clean crop seed, animal feed and hay। So अगर हम लोग ये कल्चरल सामान है ना प्रिवेंशन मेथड, जिसमें क्रॉप का जो सीड है वो वीड फ्री होना चाहिए, एनिमल फीड वीड सीड फ्री होना चाहिए, हे जो है उसके अंदर सीड नहीं होने चाहिए। सो इस वजह से जो डिस्पर्सल ऑफ वीड है वो कम हो सकता है।
बाकी मेथड कौन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पढ़े हुए ये चीजें, क्लीनिंग ऑफ द फील्ड मशीनरी, हम जो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्लीन करना चाहिए हम लोगों ने, हार्वेस्ट इक्विपमेंट्स को क्लीन करना चाहिए, देन प्रॉपर लॉन्ग टर्म मैन्योर स्टोरेज करना चाहिए, इस वजह से वीड सीड की जो वायबिलिटी है उसको हम लोग कम कर पा सकते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ द वीड फ्री इरिगेशन वाटर, वीड फ्री इरिगेशन वाटर, वाटर चैनल के अंदर जो है वीड के सीड नहीं गिरने चाहिए, वीड का पॉपुलेशन वाटर चैनल के अंदर नहीं होना चाहिए। सो बाय दिस मीन्स यू कैन प्रिवेंट द dispersal of the weeds. Again crop rotation is one of the practice, जिसके वजह से हम लोग जो है एक पर्टिकुलर वीड का डोमिनेंस जो है एक पर्टिकुलर क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर कर पाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो फील्ड्स है या तो फील्ड क्रॉप्स है उसमें प्रॉब्लम जो है जो वीड्स का वो कम होगा। देन क्रॉप रोटेशन इंक्लूड्स not only crops that compete well with perennial weeds but also those that allow the use of the herbicide to control the perennial weeds. Then mechanical weed control. So mechanically हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाते हैं ऐसे पेरेनियल वीड्स को, फिजिकल एक्टिविटी दैट इनहिबिट अनवांटेड प्लांट ग्रोथ, देन इट इंक्लूड द रिमूवल, either you have to remove it physically, mechanically, or injure or kill or create such unfavorable condition for development of the weeds. Then in pasture and forages, frequent moving or cutting can prevent the weed seed production. So pasture और forages में frequently cutting करते हैं हम लोग, moving करते हैं, तो we don't want to allow the weed to reach to the seeding stage and reduce the amount of energy stored in the below ground structures, और उसके अंदर जो below ground structure है उसकी एनर्जी कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका जो असर है सीड प्रोडक्शन पर होगा। देन मेंटेनेंस ऑफ द वाइगरस क्रॉप स्टैंड, अगर हम लोग डोमिनेंस करवाना है हमको क्रॉप्स का, तो हमारा जो प्लांट पॉपुलेशन है वो ज्यादा होना चाहिए, वो उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिसके वजह से हम लोग जो है कंपटीशन डेवलप कर सकते हैं क्रॉप एंड वीड की वजह से, एंड अल्टीमेटली इट विल सप्रेस द पेरेनियल weed growth. So maintenance of vigorous crop stand through proper fertility and water management, seeding density and variety selection will allow the competitive ability of the crops to suppress the perennial weeds, and इसके वजह से हम लोग जो है जो मैकेनिकल मेथड से पेरेनियल वीड्स का कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। देन केमिकल वीड कंट्रोल, केमिकल वीड कंट्रोल जो है हम लोग सोलली नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज मल्टीपल मेथड्स। सो इन केमिकल मेथड व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर द रिपीटेशन ऑफ द स्प्रे ऑफ द हर्बिसाइड, है ना, हम लोग रिपीटेटिव यूज ऑफ हर्बिसाइड करना चाहिए। एट द सेम टाइम हम लोगों ने कोई फिजिकल या कल्चरल मेथड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो जो पेरिनियल वीड्स का जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लमेटिक वीड्स का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। नाउ हम लोग हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो हर्बिसाइड के इस्तेमाल में सबसे पहली चीज क्या है, वी आर अप्लाइंग इट ऑन द फोलियर पार्ट ऑफ द क्रॉप, और फोलियर ऑफ द क्रॉप इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है, जनरली क्रॉप में दो टाइप के लीव्स है, यंग लीव्स होते हैं। यंग लीव्स क्या करते हैं, दे आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स, ओके, एंड दे आर स्टार्टिंग टू मैच्योर, and the mature leaves what they are doing, they are going for the more action of the photosynthesis, ज्यादा से ज्यादा एक्शन जो है जो मैच्योर लीव्स है फोटोसिंथेसिस उसको सपोर्ट करते हैं, एंड जो भी photosynthetes they are able to gather like sucrose, they are moving it to the roots, and herbicide में हम लोग वही चीज का फायदा लेते हैं, हम लोग
जो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी केमिकल है that is spread on the crop, and crop is sending the the weeds are sending the herbicide ultimately to the fruits, and this is how it is controlled. So herbicide are most effective on the perennial weeds in early fall when weeds are transporting energy to root before winter dormancy. So treatment just before and during flower bud initiation also is effective, as herbicide will be carried out with photosynthetic products to the roots. Ensure presence of mature foliage, apply post-emergence herbicide either 1 or 2 weeks before cultivating or moving, or after weeding. Regrowth is at least 8 inches tall. So Dr. Prashant? Yes, sir, please. Yeah. So can we stop now? Okay, if from your We have side to continue. it's fine, then we will stop here. I request participants, please, if any having any query or any question regarding the topic taught by sir, they can ask directly by unmuting themselves, or they can drop their questions, if any, in the chat box also. Anybody from participants want to ask? If somehow you don't understand the concept, you can ask to the sir. Okay, I think no any queries regarding the topic. You elaboratively present all the topic given by you. Very informative presentation is there. I request Mr. Nana Sahib Gule to please conclude the session. And the yes, afternoon session will also be there, na? Afternoon session will also be there, na? Yes. Okay. Afternoon session for is of board ke sir. So no session of mine in afternoon? You are not there. No, sir, no. तुमचा कोणता टॉपिक Okay, I राहिला thought it is in the morning and afternoon also. No. 2 hours session is थोडासा there. राहिलेला आहे, हा तेच म्हटलं. Okay. You can 2 hours you can session is continue there. now. Okay, I thought the 1 more hour is there in the afternoon. That's why I asked to stop. No. We are going to continuously 2 hours. Okay. I thought you have finished the topic all. No. So some problem. The parasitic weed is also remaining. Okay. So Please I think we continue, should sir. continue Please with continue. that. Yeah. Right. Okay. So biologically, okay, chemical weed control. Now biologically, how we can control such kind of weeds? We can control through integrated weed management. We have again because it is very difficult to control through one method. A fungus, Concoleolus lunatus, kills
yard grass seedling with fewer than 2 leaves, but growth of larger plants is not only slowed and plants recover. So if you are using one method, so this fungus only able to suppress the seedlings, but it is not controlling. On the contrary, if you are using the same fungus and after that, if you are going for a sublethal dose of herbicide called atrazine, then you can wholly control the this barnyard grass. So biological method में हम लोग जो है इसको control कर सकते हैं. Method. Integrated weed management is using. So among the problematic weed, Parthenium is there, and this weed was first time seen in India in Maharashtra during 1966 and 1956 when we had imported when we had imported the Melo from America. So this herbicide is having very high fecundity, dispersal rate is very high, allopathic effect is there due to this weed, okay, and the animals generally not feeding on this plant. Anti-feedant system is there, and it is having wide adaptability number of states of India. Then Parthenium hysterophorus is mostly creating a skin diseases in number of peoples. Parthenium is causing dermatitis and large number of airborne contact. So Parthenium is reported to be responsible for largest number of airborne contact dermatitis in India. Almost every part of the plant except root is reactive. So it is having some allelopathic effect on the raw. See a picture, persons they are having skin allergy and they are having the problem of the skin due to Parthenium hysterophorus. Parthenium hysterophorus is problematic to livestock also. They are causing fever and rashes in the animals. Parthenium pollens were observed in atmosphere throughout the year. And Parthenium is also causing asthma and dermatitis. और एक चीज पार्थेनियम से होती है, गलती से अगर एनिमल इसको खा जाते हैं तो मिल्क के अंदर एक अलग से उसका फ्लेवर या स्मेल आती है. It is a bad flavor or smell you can see and say. Now how we can control the Parthenium? Parthenium जो है अलग अलग मेथड से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. So how we can control it? We can control it through a different approach called as integrated Parthenium management. इस approach में हम लोग are having 4 methods. Sowing of the Cassia tora. Cassia tora is such a dominant type of weed which can control or the dominance of the Parthenium. So Cassia tora का population अगर बढ़ेगा तो ultimately there will be separation of the Parthenium. Again, one advantage of the Cassia tora is there. It is totally a medicinal plant. Cassia tora belongs to Leguminous family, so it can fix atmospheric nitrogen. So
there are number of advantages of the Cassia tora over Parthenium. So if you want to change the flora, weed flora, then we'll give the advantage to manual weeding is there. Then one Mexican beetle is released by the Directorate of Weed Science, Jabalpur, and its name is Zygogramma bicolorata. So Zygogramma bicolorata is feeding on the foliage of the Parthenium, and we can control through biological method. Then chemical control is there. In chemical control, control we can have atrazine, 2,4-D, glyphosate, metribuzin you can use for control of the Parthenium. So I told you earlier also the Cassia tora, you can use Cassia tora, and then Abutilon indicum, such kind of weeds, it can have the allelopathic action on Parthenium, and there is suppression on the growth of the Parthenium hysterophorus. Then manual weeding is there, then zygogramma, and use of the chemical control. Number of peoples have prepared botanicals from Cassia tora, and they have applied the Cassia tora botanicals as a spray on the Parthenium population, and they have controlled or suppressed the population of the Parthenium. इसको हम लोग कांग्रेस ग्रास कहते हैं, है ना, या कैरेट ग्रास कहते हैं बहुत जगह पर. See, one picture is here. It was taken in 2005. The picture is here. You can see the dominance of Parthenium is there on this road. On the next year, what happened? There was more dominance of the Cassia tora. You can see. So you can see the action of the Cassia tora. It has suppressed the population of the Parthenium in the next year. So this is the replacement of the weed happened in it. These are the beetles of the Zygogramma bicolorata, which are feeding on the foliage of the Parthenium. So chemically, how we can control it? I told you, atrazine you can use tripol. Okay, you can use glyphosate, metribuzin. Number of options are there. Or else you can also go for the vermicomposting of the Parthenium. Then parasitic weed. Parasitic weed are weeds living on the crop plants through parasitism. So those weeds plants are dependent for their survival for their entire growing period or part of that on other plant like crops. We can call it as a parasitic weed, and the phenomena is called as parasitism. So here the plant which is creating problem to the crop plant is parasite, and our crop are the host for it. So parasitic plants can be divided into two types. First one, the obligate parasite, and second one, non-obligate parasites. So generally the obligate parasites, they are having solely they are dependent on the living host. They only want the living host. But non-obligate parasites live on the living or dead host. इसको हम लोग saprophytic plants भी कह सकते हैं. Okay, so obligate parasite and non-obligate parasite. Then parasitic जो weeds है, इसको जो है जैसे 8 से 10 फैमिलीज है जो पैरासिटिक वीड को जो है बढ़ावा देती है. उसमें से 4 फैमिली ऐसी है जो ज्यादा पैरासिटिक वीड को बढ़ावा देती है. So these 4 families are Convolvulaceae family, Orobanchaceae family, then Scrophulariaceae family and Loranthaceae family. So Convolvulaceae family जो है इसका एग्जाम्पल है Cuscuta. Then Orobanchaceae family, its example is Orobanchae. Then
स्क्रोफुलेरेसी फैमिली स्ट्राइगा, एंड लोरेंथेसी फैमिली जो है लोरेंथस है और बाकी स्पीशीज है। सो ये जो 4 फैमिलीज है ये ज्यादा से ज्यादा पैरासिटिक प्लांट्स जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं देखे गए। देन टाइप्स ऑफ पैरासिटिक वीड्स। पैरासिटिक वीड को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन। दोस टाइप ऑफ प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो क्लोरोफिल खुद नहीं बना पाते हैं, दोज डू नॉट हैव क्लोरोफिल and depends on the host for the total sustenance. So ओरोबंचे एक ऐसा मेंबर है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है और टोटली उसका लाइफ साइकिल जो है वो प्लांट्स के ऊपर, होस्ट के ऊपर डिपेंड है। Another type of parasitic weeds are there जो क्लोरोफिल तो सिंथेसाइज कर सकता है लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। इसका एग्जांपल है कस्कुटा। Third type of classification in parasitic weed is there. It is those that can fix the carbon nearly as well as the plant host plants. So Striga. तो Striga जो है वो लगभग प्लांट के इतना ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो 3 टाइप के फोटोसिंथेसिस है जिसके बेसिस पर जो पैरासिटिक वीड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। उसमें से एक है जो बिल्कुल क्लोरोफिल नहीं बना पाता है, उसका एग्जांपल है ओरोबंचे। लिमिटेड अमाउंट में बना पाता है कस्कुटा, एंड ज्यादा बना पाता है वो है स्ट्राइगा। देन कॉमन पैरासिटिक प्लांट्स जिसको हम लोगों ने 2 सेमी पैरासिटिक में दो के होलो पैरासिटिक एंड सेमी पैरासिटिक। सॉरी स्टेम पैरासाइट है, स्टेम पैरासिटिक में होलो पैरासाइट है और सेमी पैरासिटिक वीड है। सो स्टेम पैरासाइट्स के 2 एग्जांपल है जो कंप्लीटली पैरासाइट है, entirely dependent on the host plant is Cuscuta, and semi parasitic लोरेंथस जो स्टेम के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन उसका फोटोसिंथेसिस वो खुद कर पाता है। सो लोरेंथस इज मोस्टली सीन इन द मैंगो। ओके, देन Cuscuta can be seen on the lucerne and bajra and other perennial trees also. Then root parasite में कंप्लीट रूट पैरासाइट है ओरोबंचे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। देन सेमी पैरासिटिक प्लांट इज एग्जांपल इज स्ट्राइगा। देन ये जो पैरासिटिक प्लांट्स है, हाउ दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू द होस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ स्पेशल अपेंडेज, और इस अपेंडेज का नाम है होस्टोरियम। सो होस्टोरियम इज ऑर्गन ऑफ द पैरासिटिक वीड फॉर अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट टिश्यू। होस्टोरियम की वजह से दे कैन आर एबल टू इंसर्ट देयर द channel inside the host and they can absorb some nutrients or photosynthetes from the host plant. तो स्ट्रक्चर ऑफ होस्टोरियम जो है वो स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज हो सकता है बट उसका फंक्शन जो है वो सभी स्पीशीज में कॉमन रहेगा। इट विल बी हैविंग सेम फंक्शन। So there are 3 genera of parasitic weed which hamper the agricultural production under tropical and subtropical, especially in Africa and Asia. तो Striga, Cuscuta and Orobanche ये तीनों जो है एशिया और अफ्रीका में ज्यादा देखने मिलते हैं। स्ट्राइगा का और एक नाम है विच वीड। Cuscuta can also be called as dodder and Orobanche as a broom rape. So such kind of synonym can be asked in the examination. Striga, you can see the picture of the Striga. Color is totally green, means इसका फोटोसिंथेसिस जो है वो ये अच्छी तरीके से कर पाता है। और इसके होस्ट जनरली कौन है? स्ट्राइगा के होस्ट जो जनरली सीरियल क्रॉप्स जो है ना, राइस है,
सोरगम है, शुगर केन है। तो सोरगम और शुगर केन में स्ट्राइगा जो है ज्यादा आपको देखने मिलेगा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच वीड। मोनोक्रॉपिंग, खास करके मोनोक्रॉपिंग की वजह से, मोनोक्रॉपिंग ऑफ सोरगम से, मोनोक्रॉपिंग ऑफ द शुगर केन, जिसकी वजह से स्ट्राइगा जो शुगर केन में देखने मिलता है। Then how we can control the Striga? Striga कंट्रोल करने के लिए एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, यह एक क्लासिकल जो है फॉडर क्रॉप है जिसका नाम है डेस्मोडियम। सो सिल्वर लीफ डेस्मोडियम जो है, जो जिसके अंदर एक एलिलोपैथिक इफेक्ट है, जिसके एलिलोपैथिक इफेक्ट की वजह से स्ट्राइगा का पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। So if you want to reduce the Striga population in sugarcane or say sorghum, then you can take the intercrop of the desmodium, और उसके वजह से स्ट्राइगा का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, और desmodium as a fodder crop you can use. So intercropping corn with silver leaf desmodium, it can control the Striga. Then use of the seeds that are Striga free, ऐसे सीड्स का हम लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। होइंग एंड हैंड वीडिंग का हम लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। देन क्रॉप रोटेशन, द लेग्यूम, द सीरियल क्रॉप शुड बी रोटेट विद द लेग्यूम क्रॉप्स लाइक सोयाबीन, मूंग बीन एंड अदर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। सो इस तरीके से स्ट्राइगा यू कैन कंट्रोल, बट द एग्जांपल इज क्लासिकल डेस्मोडियम। तो डेस्मोडियम आप लोग ध्यान में रखिए, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ट्रैप क्रॉप्स, हम लोग अलग अलग ट्रैप क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउपी है, ग्राउंडनट है, लिनसीड है, कॉटन है, सनफ्लावर है, कैस्टर, दिस वी कैन यूज। देन कस्कुटा या डॉडर है ना, इसका इस्तेमाल जो है यानी इसका जो डोमिनेंस है जो फील्ड क्रॉप्स में भी है और पेरिनियल क्रॉप्स दोनों में देखने मिलता है ये। How you can control the Striga, sorry, Cuscuta? You can see this is the acacia plant and it is full of Cuscuta. इसको अमरवेल भी हम लोग कहते हैं। So pulling up host crop immediately, host crop से इसको तुरंत हटाना चाहिए। और हर्बिसाइड, जो एक हर्बिसाइड का नाम यहाँ दिया है डैक्थल, it can be used in the spring. Then removing is the only method we can use, or dactyl you can use. Host plant must be pruned significantly lower so that the dodder will not go over the host plant. Then Orobanche generally जो सोलेनेसी फैमिली वाले जो मेंबर्स है उनके ऊपर जो है as a they are the host, or for example tomato, tobacco, okay, brinjal, ऐसे जो क्रॉप्स है इसके ऊपर ओरोबंचे जो है डोमिनेट करता है। You can see it can't synthesize the it is completely white or reddish in color. It is not in, so it is not able to do photosynthesis. So controlling Orobanche is very difficult. It grows initially underground and seeds are very small and they are having high viability. So how we can control it? You can control through clean crop. Before planting, all farm implements should be inspected and avoid the transfer of soil from an infested area to non-infested area. Quarantine should be followed. से हम लोग सकते हैं। एक खास चीज आप लोग ध्यान में रखिए, पेपर is considered as the most effective trap crop for Orobanche.
एंड कैच क्रॉप जो है खास करके टोरिया इज द गुड क्रॉप फॉर द ओरो बंचेस. सो आप लोग पेपर एंड टोरिया यू कैन keep in mind for the examination. Then critical weed control. So critical period of the weed competition. So it is the shortest time span during the crop growth when weeding results in highest economic return, or the period between early growing growth which weeds can grow without affecting crop yield and the point after which weed growth does not affect the yield. जनरली क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड जो होता है ना किसी भी क्रॉप का, इन जनरल एक थंब रूल क्या है आप लोग ध्यान में रखिए, दिस इज द 1/3 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप. 90 डेज का अगर क्रॉप है तो उसका जो क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड रहेगा लगभग 30 डेज रहेगा. सो दिस इज द थंब रूल एंड यू कैन कीप इन माइंड फॉर द एग्जामिनेशन. देन क्रॉप वाइज अलग अलग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पर दी हुई है, अलग अलग मेथड्स यहाँ पर दी हुई है. देखिए राइस क्रॉप में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, द क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड इज 20 to 30 डेज. अलग अलग कल्चरल मेथड्स है जिसकी वजह से हम लोग वीड को कंट्रोल कर पाएंगे. केमिकली पेंडिमिथिलिन या ब्यूटेक्लोर यू कैन यूज. बायोलॉजिकली हिर्श या मेनेलिया स्पीशीज यू कैन यूज टू is a root rot, rice root rot nematode which control most upland rice weeds. So you can use azolla for the biocontrol in rice for control of the weed. Then you can go for the stale seed bed technology, land preparation, etc. You can do. Then in weed, the critical period of crop weed is 15 to 30 days. एंड आइसोप्रोट्यूरिन हम लोगों ने देखे थे, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग जनरली करते हैं 2,4-D और आइसोप्रोट्यूरिन का इस्तेमाल हम लोग वीड के कंट्रोल में करते हैं इन वीट. इन राइस आई टोल्ड यू द ब्यूटेक्लोर. देन इन सोरगम what is critical period of weed control, 21 to 40 days. Then you can go for the number of cultural methods in sorghum. Chemical, you can use atrazine. And inclusion of crop rotation, cotton, sorghum crop rotation you can use. Then in maize again you can go for the atrazine and alaclor. So atrazine ज्यादा जो हम लोग मेज में इस्तेमाल करते हैं और सोरगम में इस्तेमाल करते हैं. So the critical period is 2 to 6 weeks. Then in groundnut you can use alaclor or the chemical control. Its critical period of weed control is 45 days. In sunflower, the critical period is 4 to 6 weeks. And you can use the chemicals like fluchloralin and pendimethalin. So fluchloralin generally कैसे स्प्रे होता है, हमेशा before sowing, है ना. And pendimethalin pre-emergence. Then cotton में एक फेमस herbicide है डायोरॉन, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. Then you can use मोनोयूरॉन, फ्लूक्लोरालिन, ये herbicide का इस्तेमाल हम लोग जो है कॉटन में कर सकते हैं. कॉटन में you can see the critical period is 45 days. Pulses में प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड या प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड हम लोगों ने ज्यादा करना चाहिए. फ्लूक्लोरालिन एंड पेंडिमिथिलिन इनका इस्तेमाल जो है ज्यादा करना चाहिए. क्रॉप क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंट्रोल इज 30 to 35 days.
in tobacco, the critical period is 9 weeks. You can see this. Can we keep in mind? You can see it is up to 2.5 months, near about, or say more than 2 months. So such kind of examples you can keep in mind. रेगुलर थिंग जो हम लोग एग्जाम के लिए फॉलो नहीं कर सकते, जो जो एक्सेप्शनल चीजें उनको याद रखना चाहिए हम लोगों ने. So fluchloralin and pendimethalin can be used in tobacco. Then in sugarcane, the critical period of it is 4 to 5 months. Okay, so such things should be keep in mind for sugarcane. Pre-emergence herbicide as atrazine, simazine, and aclor can be used, and post-emergence you can use glyphosate. So after the setting of the sugarcane crop, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करेंगे तो शुगर केन पे उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, और उसका असर शुगर केन पे नहीं होगा. दो glyphosate is a non-selective herbicide because crops become very sturdy at that time. Okay, so you can use glyphosate and paraquat. So that is how what I can tell from my side. We have seen three things in our lecture. Firstly, the control of the weeds, or we can say through herbicides. First thing, through biological control and cultural control. Then we have seen different kinds of aquatic weeds. Then parasitic weeds we have seen. Then we have seen a very different topic, that is shift in weeds and resistance in weeds. So we have seen what is resistance, what is shift, and we have seen how to control the shift and resistance in the crops. So we have to go for the multiple herbicide rather going for a single herbicide. Okay, Dr. Prashant, I have finished from my side. So participants are requested to, if you have any query or question, you can ask directly to the sir, or put your question in chat box. So I think, sir, there is no any question. Okay. So good afternoon to all. So we are very much thankful to you, sir, on behalf of Agriculture Extension and Communication Department, PGI MPK Rauri. Due to some network issues, I could not give your introduction. So you have very nicely covered all topics, those we have you have alerted. In that, weed flora shifts, intercropping systems, special and problematic weeds, their management in crop and non-crop situations, weed management in field crops. In that also, how shift occurs in weed and factors affecting it. Then weed resistance, herbicide resistance management, weed management principles to reduce weed shift and resistance. Then problematic weeds, aquatic weeds, in that floating weeds, submerged weeds, immerged weeds. You have also very nicely explained individual aquatic weeds like water hyacinth, water lettuce, water fern. Then you have also explained advantages of mechanical action of weed control, biological method of weed control, also chemical method. In problematic weeds, perennial weed management, its prevention and its mechanical and chemical weed control. Then you have very nicely explained integrated weed management of parasitic weeds, its types and its control. So thank you once again, sir, for giving your valuable guidance and time to us. Thank you so much, sir. Thank you, MPK Rauri and Dr. Prashant, sir. for Thank you. giving this
छान झालं लेक्चर. ओके ओके. Thank you, Dr. Prashant, for giving this opportunity to me, and I am also thankful to Dr. MPK Rauri. Sorry, We love to Ministry do MPK that, sir. Rauri. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.